Bismillahirrahmanirrahim. It's Salia Komal from Department of Zoology 6th semester and topic of discussion is germ layer formation and its importance. These are the contents which I will discuss later in this video. Brief introduction of development. First step is fertilization. Fertilization में एक sperm और egg आपस में फ्यूज़ करते हैं और हमारे पास डिप्लॉइड zygote बन जाता है. zygote में सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, क्लेवेजेस होते हैं, माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और मोरूला बन जाता है. मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से आगे देन जर्म लेयर फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है. गैस्ट्रुलेशन ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है गैस्टर, जिसका मतलब है स्टमक, और इस टर्म को सबसे पहले ई हैकल ने 1872 में यूज़ किया था. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स की रीअरेंजमेंट होती है और 3 जर्म लेयर फॉर्म होती हैं. Germ layer is a group of cells in the embryo that interact with each other as the embryo develop and contribute to the formation of organ and tissues. तमाम animal except sponges के अंदर हमारे पास 2 to 3 germ layers होती हैं. Classification of organism based on germ layer. There are two types of organism, diploblastic and triploblastic organism. Diploblastic organism में हमारे पास 2 germ layers होती हैं, ectoderm and endoderm. इनमें हमारे पास radial symmetry होती है. फॉर एग्जांपल नाइडेरिया फैमिली में जेलीफिश और एनीमून भी हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्ट में देखा जाए तो हमारे पास 3 germ layer होते हैं, ectoderm, endoderm and mesoderm. Together, 3 germ layers, endoderm, ectoderm and mesoderm, will give rise to every organ in the body and form skin and hair. Morphogenetic events in gastrulation: invagination, involution, ingression, delamination and epiboly. Invagination is a process in which infolding of cell sheet into the embryo occurs as you see in the picture, and this process helps in endoderm formation in sea urchin. After invagination, involution occurs, in which interning of cell sheet over the basal surface and outer layer occur, and this process occurs in mesoderm formation of amphibians. After involution, ingression occurs, in which migration of individual cells into the embryo occurs, and this process happens in sea urchin mesoderm formation and Drosophila neuroblast cells formation. After ingression, delamination occurs, in which splitting or migration of one sheet into the 2 sheets, and this process helps in hypoblast formation in birds and mammals. In delamination, the expansion of one cell sheet over the other cells occurs, and this process occurs in ectoderm formation in amphibians and sea urchin. अब हम देखेंगे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनती कैसे है. एंडोडर्म फॉर्मेशन, जो ब्लास्टोमेरिक वेसिकल्स होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं. जो एम्ब्रियोनल लोब के लोअर सरफेस पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एम्ब्रियोनल लोब से डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं थ्रू डेलेमिनेशन प्रोसेस. जो अब डिटैच सेल्स हैं वो फ्लैट होते हैं, डिवाइड होते हैं और अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं और एंडोडर्म बनाते हैं इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल. The embryo at this stage is tubular, encloses a hollow tube called primitive gut lined by endoderm. The part of endoderm located under the embryonal lobe is called embryonic endoderm. Formation of embryonic disc. जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कंटिन्यू ग्रो होता रहता है. एम्ब्रियोनिक नोब स्ट्रेच होता है, इसके जो सेल्स होते हैं टूटते हैं और फैलते हैं. जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनल लोब के, वो जो ऊपर से टूटे थे और फैले थे, वो एक रेगुलर लेयर बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क. मेसोडर्म फॉर्मेशन, ये कैडवल रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क से स्टार्ट होती है, जिसके हमारे पास सेल प्रोलिफरेट करते हैं, फैलते हैं और एक थिकनिंग कॉज करते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर. जो प्रोलिफरेटेड सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक डिस्क से सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म मेसोडर्म लेयर बनाते हैं. एंडोडर्म फॉर्मेशन, मेसोडर्म की फॉर्मेशन के बाद जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर वो हमारे पास एक्टोडर्म बनाते हैं. Neural crus cells are present in early vertebrate embryo, have been fascinating group of cells because of its multipotency, long range of migration through the embryo and its capacity to generate a number of differentiated cell types. Although neural crus cells ectoderm से ड्राइव होते हैं, लेकिन इसको फोर्थ जर्म लेयर कंसीडर करते हैं. न्यूरल क्रस सेल्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा ये अहम किरदार अदा करते हैं. ये डॉर्सल रीजन ऑफ न्यूरल ट्यूब से ओरिजिनेट होते हैं. हम देखेंगे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन, टिश्यूज़ और सेल्स बनाती हैं. Ectoderm develops into surface ectoderm, neural crust and the neural tube. The surface ectoderm develops into epidermis, hairs, lens of eye, sebaceous glands, cornea, tooth, enamel and epithelium of mouth and nose. Neural crust cells of ectoderm develops into peripheral nervous system, adrenal medulla, melanocyte, facial cartilage, dentin of teeth.
Neural crust of ectoderm develops into peripheral nervous system, adrenal medulla, melanocyte, facial cartilage, and dentin of teeth. The neural tube develops into brain, spinal cord, posterior pituitary, motor neurons, and retina. Mesoderm have several components like intermediate mesoderm, paraxial mesoderm, lateral plate mesoderm, and chorda mesoderm. Chorda mesoderm develops into notochord. Intermediate mesoderm develops into kidney and gonads. Paraxial mesoderm develops into cartilage, skeletal muscle, and dermis. The lateral plate of mesoderm develops into circulatory system including heart and spleen, the wall of gut, and the wall of human body. Endoderm develop into stomach, colon, liver, bladder, trachea, lungs, pharynx, thyroid, parathyroid, and intestine. एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट के दरमियान स्पेस होती है जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। वो एक फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स बाय एक्टिंग एज अ शॉक ऑब्जर्वर एंड फ्रॉम ड्राइंग, यानी खुश्क होने से बचाता है। Here are the factors that control the process of germ layer formation. Cell migration and specific cations are controlled by fibroblast growth factor 8, which is synthesized by streak cells themselves. This growth factor controls the cell movement by downregulating ectoderm, a protein that normally binds epiblast cells together. FCFA then controls the cell-specific action into mesoderm by regulating expression. अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टिश्यू डिफरेंशिएशन। जर्म लेयर जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है वो डिफरेंट स्पेसिफिक टिश्यूज़ ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। सेकेंड पॉइंट इज़ बॉडी प्लान फॉर्मेशन। जर्म लेयर इस्टेब्लिश द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Ectoderm forms outermost layer giving rise to nervous system, skin and related structure. The mesoderm forms between the ectoderm and endoderm contribute muscles, bones and internal organs. The endoderm form the innermost layer giving the rise to the gastrointestinal tract, liver, pancreas and other internal organs. Third point is developing plasticity. The germ layer exhibits plasticity during development, allowing the cell to migrate, differentiate, and form a complex structures. This plasticity is crucial for the formation of organ systems. Fourth point is evolutionary significance. Germ layer formation is a fundamental aspect of animal development conserved across many species. Studying the germ layer formation provides the insight into the evolutionary relationship among different organisms. Fifth point is clinical relevance. Understanding the germ layer formation is essential for understanding the developmental disorders and diseases. Many birth defects and genetic disorders result from abnormalities in the germ layer formation. Here are the references of the video. If you have any query related to this topic, ask me in the comment box. Thanks for your attention.